So in today's lesson we will be discussing the question answers of sexual reproduction in flowering plants. So starting with the questions first. Plants identical to the mother plants can be obtained from where? It's an old question. फिर भी asexual sexual reproduction से एक सवाल है. That's the topic. अगर प्लांट्स मदर से जो ऑफस्प्रिंग है वो मदर से आइडेंटिकल है तो ये कौन सा तरीके से बना सकते हैं? Seeds, stem cutting, both A and B, none of this. पेरेंट से आइडेंटिकल बोला. सो सिंगल पेरेंट के आइडेंटिकल मतलब असेक्सुअल होता है ना. अगर पेरेंट से डिसिमिलर बच्चे होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर्स आके बच्चा विल बी रिकॉम्बिनेंट. यहाँ पे सिमिलर टू वन पेरेंट हो पूछा, which means that asexual reproduction. इसमें asexual reproduction यही है, stem cutting, right? So plants identical to the mother plants can be obtained from stem cutting. इसका रीजन समझाना. asexual reproduction पूछा है इस पर. Another question. Syngamy means what? Come. Syngamy means what? पता है फाल्गुनी? Fusion of male and female gamete. Female gamete egg होता है ना. So is she correct? Male and female gamete की fusion है syngamy? Yes. Fusion of gametes. Okay. D option is the correct one. And you know one more is there, triple fusion. Fusion of male gamete with the central cell nucleus. That means polar nucleus. Then answer is syngamy is the fusion of two male of one of the two male gamete with the egg. Okay, male gamete दो है लेकिन उसमें से एक ही फ्यूज होता है egg से. That is called the syngamy. Yeah. Asexual reproduction or vegetative propagation. पहले question रहेगा नहीं. That is not a question, I think. Let's see. Identify the correct set of statements. 2022 NEET है वो, देखते हैं. So you all read it in mind, then decide करो. Let me see who is ready to say the answer first. This question is basically based from morphology of flowering plants in 11th standard. Okay. Any idea whether the first statement is true or false? The leaflet are modified into pointed hard thorns in citrus and bougainvillea. Leaf modified to thorns. Is it correct? Leaf modified to spine. वो thorn से modified नहीं होता है. Okay. So this is wrong. Stem modified into thorns लिखा तो वो सही था. So A is wrong. B. Axillary buds form slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin. Axillary buds form tendril. That is also wrong. Stem tendril बनता है ना. Stem will become the tendrils. So it's not the axillary bud. वहाँ पे भी गलत term दिया है. So stem forms the spirally coiled tendrils in cucumber. Then stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the functions of leaf. That is correct, right? Stem is flattened and fleshy in opuntia. Opuntia is the cactus, right? उसमें stem jelly like है. That means water store करते हैं. So it's true. Rhizophora
एक मिनट, ये axillary buds form the slender and spirally coiled tendrils in cucumber. ये axillary buds develop to form the stem. Then that's correct. इसमें multiple options सही है. I just saw the options now. I felt like it is only A, B, C, D, E, but it is multiple options सही है. So then we can assume that C is also true, B is also true. B correct है because axillary bud से develop होता है branches and stem. Okay, so that is correct. Now, rhizophora shows vertically upward growing roots that helps to get oxygen for respiration. Rhizophora shows vertically up. Rhizophora is which one? Mangrove. Mangroves को nematophores रहता है ना, the roots which are growing up from the soil. So this is true. Rhizophora is mangrove and it shows vertically upward growing root. So B, C, D सब सही है. Then the option will be this one. Let's check E भी सही है क्या? Subaerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. Of course, stem से vegetative propagation होता है. So A छोड़ के बाकी सब कुछ सही है. So option C is the answer. समझा? Now, see, axillary buds of stem get modified into woody straight pointed thorns. Thorns are found in many plants such as citrus and bougainvillea. ये क्यों ऐसे दिया है? Because first option, only the first sentence is the wrong sentence. उसको correct करके हुए दिया है leaflet नहीं, stem. Axillary buds of the stem is going to become the thorns as well as the tendrils. Yeah. Moving to another question. The plant parts which consist of two generations, one within the other. वेरी गुड क्वेश्चन. सच में ये नीट 2020 में पूछा है. थॉटफुल क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो यू कैन आंसर दिस. टू जनरेशंस इन वन विद इन अनदर. ऐसे कौन सा कंडीशन में है? जनरेशन 1 के अंदर जनरेशन 2. मल्टीपल ऑप्शन सही है. सी, ए, बी, सी, ये तीनों देखते हैं वन बाय वन. एनी वन अनदर आंसर? एनी अदर आंसर? ई, डी, सी एंड डी ट्रू. तुम्हारा सी एंड डी. देखते हैं. सीड इनसाइड द फ्रूट. फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी. सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल. ओवरी और ओव्यूल एक ही जनरेशन का ही है. क्या ओवरी मदर का और ओव्यूल जो सेकंड जनरेशन का होगा? नहीं ना. सो ओवरी का भी सेल्स एंड ओव्यूल का भी सेल्स एक ही पेरेंट से आते हैं. सो दैट इज नॉट द आंसर. सब फर्स्ट वन एग्री कर रहे हैं ना. pollen grains are inside the आंदर. that you should agree. देखो आंदर, आंदर इज द जनरेशन 1 पेरेंट है. उसका गमीट है pollen grain. सो pollen grain इज सेकंड जनरेशन का हो गया. करेक्ट. ओके. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस किया. टेस्टिस फर्स्ट जनरेशन का है, स्पर्म तो सेकंड जनरेशन का है. क्लियर? इसी तरह है ना आंदर के अंदर pollen grains. देन so this is true. Germinated pollen grain with 2 male gametes. Germinated pollen grain with 2 male gamete. दोनों मेल गमीट सेम जनरेशन का है. क्या एक मेल गमीट पहले जनरेशन का दूसरा जनरेशन का रहेगा क्या सेकंड मेल गमीट? नो. दोनों मेल गमीट्स इनसाइड द pollen grain are of the same generation. तो वो भी हो नहीं सकता है. सी तो नहीं है, फिर डी है. एम्ब्रियो साक इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है जो मियोसिस डिवाइड करके एम्ब्रियो साक बनता है. सो दैट इज सेकंड जनरेशन. समझा? सो इसमें इनडायरेक्टली सवाल ये है
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्सेस गमीट मैच करने को पूछ रहा है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी ऑफ जनरेशन 1, गमीट विल बी ऑफ सेकंड वन. देखो अंदर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें गमीट है पोलन ग्रेन. ओव्यूल इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें गमीट है एम्ब्रियो साक. एम्ब्रियो साक के अंदर है ना एग. हाँ तो वही तो बोल रहा हूं. तो ए एंड डी मतलब ऑप्शन ए. देखो ए, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस आर pollen grain inside the अंदर, embryo sac inside the ovule. Just think, उसका प्लोइडिटी सोचा तो भी समझेगा. गमीट विल बी haploid and the reproductive organ will be diploid. इसमें देखो pollen grain गमीट है तो haploid है, that is present in अंदर which is diploid. Then embryo sac haploid है, that is present in ovule which is diploid. So ऐसे अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. Okay, fine. तो लिख के रखो, this you can note down. आंसर ऐसे ही नोट करो. द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन विद इन द अदर आर दिस वन एंड दिस वन. Yes. Moving to another question. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by whom? यूनिलोक्युलर ओवरी, एक ही ओव्यूल होना चाहिए. जैसे मैंगो होता है, मैंगो में एक ही सीड रहता है ना, इसी तरह वन फ्लावर, उसके अंदर एक ओवरी, उसके अंदर एक ही ओव्यूल, सिंगल सीडेड प्लांट एंड इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए. देन व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट विल बी? इनफ्लोरेसेंस होना है तो इट शुड बी लाइक थोड़ा एक्सपोज होने के लिए. इनफ्लोरेसेंस दो टाइप पॉलिनेशन में हमने पढ़ा. कौन कौन सा पॉलिनेशन में पढ़ा? विंड पॉलिनेशन में भी इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए, बिकॉज छोटे छोटे फ्लावर्स को विंड से ऐसे एक्सपोज होना चाहिए ना. सो दे शुड बी अरेंज्ड इनटू, अगर इनविजिबल फ्लावर्स है, इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर्स है, तो थोड़ा दिखना चाहिए ना, उसके लिए दे हैव टू अरेंज इनटू एन इनफ्लोरेसेंस. The same happens with the insect pollination also. छोटे छोटे flowers can't attract the insect, so they will arrange into inflorescence group of flowers. So ये insect pollination and wind pollination का features है. तो दोनों है इसमें, बी insect भी दिया है, wind भी दिया है. So इसमें what will we select? We have to select on the basis of single ovule. सिंगल ओव्यूल किस में होता है? विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में होता है या इंसेक्ट पोलिनेशन में होता है? एनीवे दीज टू वी कैन एलिमिनेट. इन दोनों में से कौन है वो सेलेक्ट करने के लिए वी नीड द नॉलेज. यूनिलोक्युलर ओवरी किसका है? इट्स फॉर विंड. तो नोट डाउन करो, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स विल हैव यूनि single ovule and inflorescence. Single ovule and inflorescence. Put a hyphen and write wind pollination flowers, pollinated flowers. But also keep in mind, बस inflorescence पूछ रहा है तो then that is applicable for insect pollination also. Anyway, water pollination में inflorescence काम नहीं करता है. देखो, which of the following statement is incorrect? पढ़ो, अपने आप बता दो.
Falguni is saying A, B. पढ़ते हैं. Which one of the following statement is incorrect? Potato, banana, ginger. The plantlets arise from internodes present in the modified stem. Plantlets arise from the internodes present in the modified stem. Potato stem modification है. Absolutely correct. Sweet potato root modification है. So plantlets can arise from internodes that is present in potato, banana and ginger. Ginger is a rhizome. Banana में उसको cone बोलते हैं. But in potato we will call it as tuber, stem tuber. अलग अलग नाम से बोलते हैं, but they have stem modification. सही है. Water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to the death of fishes. Water hyacinth, that is true, correct. इसमें ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. इसमें देखो पोटैटो, जिंजर ये दोनों मॉडिफाइड स्टेम हो सकता है, बट बनाना इज नॉट ए मॉडिफाइड स्टेम. बनाना का कौन है, बट बनाना फ्रूट है ना. सो दिस इज रॉन्ग. तो दैट इज वाई मैंने बोला ये आंसर आ सकते हैं, बट ये दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. ये राइट स्टेटमेंट है. वाटर हाइसेंथ व्हिच इज ग्रोइंग इन द वाटर, इट विल कंज्यूम dissolved oxygen. This is right statement. And this one, offspring produced by the asexual reproduction are clone. That is also true. Clone matlab offsprings are similar. Microscopic motile asexual reproductive structures are called a zoospore. Yes, there are different type of spores. Like उसमें zoospore मतलब motile spores होता है जिसके पास फ्लैजेला रहते हैं. एक एग्जांपल क्लामिडोमोनास, उसको मोटाइल स्पोर रहता है. सो द आंसर विल बी ए. दिस वन इज रॉन्ग ओनली बिकॉज ऑफ बनाना. समझा? पोटैटो स्टेम ट्यूबर, ginger propagate through rhizomes, but banana, potato, banana and ginger propagate vegetatively. So the answer क्या क्वेश्चन क्या था, एक मिनट है पढ़ते हैं. Potato, banana emanates from the internodes present in the modified stem. It's not coming from the internodes. That is the question. Internode is the wrong statement. They are from the stem. Banana की plant ही mean किया है यहाँ पे, fruit नहीं. The plant itself, banana plant, ginger and potato, ये तीनों modified stem से आ रहा है. But it is not coming from the nodes. They are coming from the eyes, right? Eyes रहता है ना, potato का eyes रहता है. Then stem को भी, ginger को भी eyes रहता है. So there are specific sprouts, not the internodes. Eyes, eyes, eyes or nodes, not the internodes. तो एक बार मेंशन करो वो. पोटैटो, बनाना लिखो, and ginger. पोटैटो, बनाना, ginger are modified stems. Are modified stems. पोटैटो को आइस रहता है, बनाना और जिंजर को राइजोम बोलते हैं. एंड दे आर नॉट फ्रॉम द इंटरनोड्स. नोड से आते हैं, इंटरनोड से नहीं आते. दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट. होप यू हैव रिटन. बट पोटैटो, बनाना एंड जिंजर आर स्टेम मॉडिफिकेशंस. Next topic, pollen and pollination से सवाल है. Given below are two statements. One is labeled as assertion. पढ़ते हैं. In gymnosperms, the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. Gymnosperms में pollen grains microsporangium release करते हैं, air currents carry करते हैं. Reason पढ़ो जियान. समझा मुझे. ओके, क्वेश्चंस बाकी नहीं पढ़ना है. ओनली जस्ट सी द assertion and reason. Read it again and again. What do you think?
Have you heard about archegonia? Archegonia is the female reproductive part in gymnosperms. Antheridium is the male reproductive part in gymnosperm. ये 11th का टॉपिक है, 11th की प्लांट किंगडम से पूछा है. उन लोगों का भी फर्टिलाइजेशन ऐसा है फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह है, लेकिन pollen tube germination नहीं होता. Pollen tube is not there. Then water will bring that, और यहाँ पे ना air current bring that pollen grains to the mouth of the archegonia because they are in the water itself, right? So can you say whether assertion is true? In gymnosperm, the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air current. That is true. Microsporangium, that means that is present in the antheridium. Male reproductive organ है antheridium, उसमें microsporangium present है. This microsporangium can produce that pollen grains and it is carried by air. This is correct statement. So जैसे हम flowering plants को बोलते हैं ना, microsporangium है, pollen grain है, air carry करते हैं, the same is applicable for gymnosperm because flowering plants are angiosperm. वो उसकी just नीचे आते हैं gymnosperms. They are not developed like angiosperm, but still they have similar reproductive structures than that of the angiosperms. So this statement is true. Reason: air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia. Archegonia is flask-shaped structure. Air currents carry कर रहा है. That is also true. Where the male gametes are discharged and the pollen tube is not formed. Pollen tube form नहीं हो रहा है. Male gametes discharge भी हो रहा है. Yes. So reason is also true. And just think, assertion और reason के बीच में relation है क्या? Gymnosperm से pollen grains release कर रहा है. And the air currents are carrying that pollen grains into the archegonia. ये एयर करंट कैरी कर रहा है इसलिए बना रहा है क्या वो? नहीं. मतलब दिस रीजन इज नॉट अ रीजन फॉर द अबव सेंटेंस. दोनों सेंटेंस सही है and it makes a continuity also. Pollen grains are produced by gymnosperm and it is carried by the air current to the mouth of the archegonia. It makes the story complete. But this is happening not because of this. This is happening not because of this. This is the after effect of this, right? इसके बाद होता है ये. So it is reason होने के लिए पहले ये होना चाहिए ना. This should happen first. Reason होने के लिए. So pollination होने के बाद है क्या? Pollen grains बनाने के बाद है pollination. Okay, we can't say that pollination होने के लिए pollen बनता है. We can't say that. So it is not the correct explanation. Both A and R are true. So in gymnosperms, pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents. Okay. Pollen tubes are not formed. So you can note down this point. Pollen tubes are not formed in gymnosperm. वो key sentence है, लिख के रखो. Pollen tubes are not formed in gymnosperms. And wind pollination occurs, right? Air currents are carrying it. Air currents carry pollen grains. Just short points लिख के रखो. Okay. So हमने दो पॉइंट समझा कि pollen grains are transported by wind. Then pollen tube germination is not required here. In gymnosperm लिख के रखा. Yeah. While in the case of sexually reproducing plants, they need wind, water, insect or animals for pollination, and इसमें pollen tube growth भी होना चाहिए. Large, colorful, fragrant flowers with nectar. Very easy question. कौन सा pollination में होगा? Insect pollination. Large, colorful, fragrant flowers with nectar ना. हाँ, तो क्या रहेगा आंसर? Insect pollination, right? So let's check the answer. हाँ, insect pollination. लिख. नहीं पता है तो लिखो. Large, colorful,
flowers with the nectar. Don't confuse it with the bird pollination. And ये भी सोचो कि bird pollination is not mentioned in CBSE. Only state board में mention किया है. So CBSE के basis पे है majority of the exams will be coming. So you don't need to think about that pollination also. Bird pollination में भी nectars रहता है, but the flowers will be of tubular shape matching with the beak of the bird. And that is rare when compared to insects. ज़्यादातर insect ही करते हैं pollination. Now, another question. Identify the incorrect statement related to pollination. Pollination by water is quite rare in flowering plants. वो करेक्ट स्टेटमेंट है ना. वाटर पोलिनेशन रेयर है. 30 जेनेरा मेंशन किया ना टेक्स्ट. ओनली 30 जीनस की प्लांट्स में ही होता है क्या वाटर पोलिनेशन. सो दिस इज एक्चुअली है correct statement. True. Pollination by wind is more common and amongst the abiotic pollination. हाँ, वो भी सही है. Wind pollination से भी wind और water pollination ही है दो abiotic. अगर water बहुत कम है तो फिर wind का ज्यादा proportion रहेगा. So wind pollination is most common. That is true. Flowers produce foul odors to attract the flies and the beetles to get pollinated. That is also true. Some flowers will make amorphophallus. It's make foul smell. That is the name of the flower, amorphophallus. Foul smell banate. Moth and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. Moth कैसे आएगा? Butterfly तो सही है. Moth is not the answer. Honeybee and butterfly. That is the correct thing. Moth, they pollinate only some flowers which are blooming at the night, because moth is more active in the night time. Moth को देखा है? Light के पास आते हैं. छोटा. It's not having that much colorful wings or something. It's very dull colored. Okay, and it is not able to. Majority of the moths will not spread their wings like butterfly. They will just hide the lower wings, hind wings. So moths are not common. This is false. So the answer is D. Among the animals, insects, particularly bees and butterflies are the main pollinating agents. Look careful. Bees and butterfly are the major pollinators. Clistogamous flowers are invariably autogamous. Sakshi, what is clistogamous and cosmogamous flowers? ओपन होता है या क्लोज होता है? नहीं ना, उस दिन में बोला क्लिस्टो क्लोज्ड फ्लावर्स बनाते हैं. There are some plants which can make closed flowers and open flowers. Some plants. वो plants की examples याद है? Viola, oxalis और एक है. Find out करो. Common pansy is the other name for viola. Commelina, yes. Viola, oxalis, commelina. ऐसे तीन वो पूछता है एग्जाम में. ये तीन plants को two type of flowers बना सकते हैं, closed flowers या clistogamous flowers. So this sentence is correct, right? Clistogamous flowers are autogamous. Why? Closed है तो फिर कैसे होगा? Geitonogamy भी नहीं होगा, Cynogamy भी नहीं होगा. Only autogamy is required. Now, clistogamy is disadvantageous as there is no chance for cross pollination. Clistogamy is disadvantageous as there is no chance for
क्रॉस पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस क्यों बोलता है क्लिस्टोगामी? हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सो सेल्फ पॉलिनेशन होके होके क्या होने का चांसेस है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांसेस है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स है? डिसएडवांटेजेस बोला, ट्रू। एडवांटेजेस नहीं है ना। क्लिस्टोगामी इज डेंजरस। व्हाई? बिकॉज इट हमारे दिमाग में होना चाहिए, इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। So you have to say this. Cleistogamy is disadvantageous because there is no chance for cross pollination. So this and this are true. Then the question is क्या? हाँ, इसमें तो वो करेक्ट रीजन है या वो वाला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अलग है। देखो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वही बोलना है। बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन है। रीजन तो नहीं है उसका। अगर करेक्ट रीजन है क्या ऐसे वाला कुछ ऑप्शन भी है तो दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। Now, so what will be the correct reason? Why they are invariable autogamous? Because the flowers are not going to open at all. That will be the reason. Okay. So anyway, these two statements are correct. Moving to another question. In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months? ये मैंने लिखवाया था। few minutes, 30 minutes किसका रहता है? months किसका रहता है? 30 minutes is only for wheat and rice. months तक किसका जाता है? 3 family का नाम बोला था, उसमें 2 families में दिया है। say the 3 family, तीनों family बता दो। the 3 families in which the pollen grain is viable for months. लास्ट ईयर पढ़ा एक फैमिली है, सीबीएसई भी पढ़ा, स्टेट भी पढ़ा, सोलानेसिया, फिर लिग्मिनोसे, फिर रोज फ्लावर की फैमिली रोसेसिए। तो याद रखो सोलानेसिए, लेगुमिनोसे, रोसेसिए, ये 3 फैमिलीज में 30 डेज के ऊपर मतलब एक मंथ के ऊपर भी क्या होता है? पोलन वायबल है। सो द आंसर विल बी रोसेसिए, लेगुमिनोसे में है ना 2 फैमिली, उसके साथ सोलानेसिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे सोलानेसिए लेकिन उसके साथ पोएसिए है। दैट्स रॉन्ग। सो दिस इज द करेक्ट वन, डी। यस, रोसेसिए एंड लेगुमिनोसे लिख के रखो। रोसेसिए, लेगुमिनोसे, सोलानेसिए। पोलन वायबिलिटी इज मोर, और ऐसे लिखो पोलन वायबिलिटी इज मोर देन मंथ्स, महीनों तक रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आंसर कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा। देखो, the term used for the transfer of pollen grains from anthers of one plant to the stigma of a different plant, which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. Transfer of pollen grains from one plant to the other plant, plant, synogamy, cross pollination, right? Yes. So the answer is A. Yes. जीटनोगमी क्या है? नेहा, व्हाट इज जीटनोगमी? एक प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। वेरी गुड। सो इज इट सेल्फ फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? अपूर्वा, सेल्फ है या क्रॉस है? सेल्फ है, आइडेंटिकली है ना, एक ही पेरेंट से आ। ट्रू। ये भी आंसर कर सकते नीट 2020। देखो इतना इजी इजी क्वेश्चंस पूछता है। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय डैश। इट्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग। वाटर लिली देखा है, बहुत कलरफुल है। वाटर हाइसिंथ में वाटर है,
नाम में वाटर है लेकिन दैट्स a huge misconception. It's not water pollinated. Water hyacinthus इंसेक्ट विंड दोनों हो सकता है. सो वाटर लिली तो फिर किससे होता है? हाँ, इंसेक्ट एंड विंड किधर है? यहाँ पे बी, इंसेक्ट एंड विंड. सो वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ दोनों में वाटर है, मतलब वो वाटर से कुछ रिलेशन है, वाटर में रहता है, बट पोलिनेशन इज नॉट डन बाय वाटर. हु डूज दिस? इंसेक्ट और विंड. बी लिख के रखो. वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली are not pollinated by water. They are pollinated by wind or insects. नोट किया? Another question. What is the function of tassels in corn cob? What is the function of tassels in corn cob? corn cob की tassels में दिखाता हूँ फोटो, टेक्स्ट बुक में भी है. See such a hair-like structures on the corn. ऐसे hair-like structures दिख रहा है? Tassels. These are the tassels. Tassels of maize corn. ये tassels की function क्या है? वही पूछ रहे हैं. To trap pollen grains, to disperse pollen grains, to protect seeds and to attract insects. Trap pollen grains. इसके आंसर, no, answer is not mentioned in this slide, but I will say the answer. इसका आंसर to release pollen that is carried by wind to the females on the developing years. Just a second. Produce and disperse pollen grain है. That means the male reproductive part है. Trap नहीं है. Feathery stigma will help in the trap. Tassels of corn cob are actually stamens who are so exposed to release the stamens. So इसका आंसर ये है to disperse pollen grains. सब जगह पे वही बता रहा है, लिखो. Tassels of corn produce and disperse. Tassels of corn, TASCLS, tassels of corn produce and disperse pollen grain. ये सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग फैक्ट है कि वो ट्रैप करने के लिए रखा है या डिस्पर्स करने के लिए रखा है. डिस्पर्स करने के लिए रखा है. There comes the next question. लिखा disperse the pollen grain से उसका function. Another question. See. In angiosperms, the functional megaspore is the first cell of the female gamete. वो आंसर है क्या?
तो वो उसका क्वेश्चन मिस हो गया. दिस इज द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, वही पूछ रहे हैं. फर्स्ट वन, ovary develop into fruit. Is it true or false? True. Ovary ही fruit बनता है and ovule develop into seed. So this one is true. Zygote develops into embryo. That is also correct. Then central cell develop into endosperm. That is also correct. Central cell की जो न्यूक्लियस है polar nuclei वो second male gamete से fuse होके बनता है endosperm. Primary endosperm nucleus. Yeah. Then last one is wrong. Ovules develop into embryo sac. Ovule develop into seed, not embryo sac. So यहाँ पे correct statement क्या होना चाहिए था? Seed होना चाहिए था. Ovule develop into seed. This is true. This is true. This is true. This is wrong. Okay. Just ऐसे note करके रखो. Ovule, seed, ovary, fruit, embryo, zygote, embryo, central cell, endosperm. ऐसे arrow mark करके लिख के रखो. Next बोलूं. Another question. Functional megaspore in an angiosperm develop into what? एक ही functional megaspore रहता है ना. तीन तो देखो. Megaspore mother cell will produce how many cells? 4. Okay. 4 megaspores बनता है. ये 4 megaspores में से 3 will degenerate. Only one is functional. So that one functional क्या बनता है? That is the question. क्या बनता है? हाँ, वेरी गुड. वो फंक्शनल एम्ब्रियो साक बनेगा. कैसे? फिर से मियोसिस होता है. ऑलरेडी मियोसिस होके बना है ना, तो और मियोसिस हुआ तो हाप्लोइड का भी आधा हो जाएगा. माइटोसिस. कंटिन्यूअसली 3 माइटोसिस होता है. 3 माइटोसिस विल हैपन एंड आफ्टर 3 माइटोसिस 8 न्यूक्लियस प्लस 7 सेल कंडीशन होता है. इसको हम क्या बोलता है? 8 न्यूक्लियस प्लस 7 सेल कंडीशन को दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो साक. Embryo sac. So this is the entire story. Answer will be embryo sac. Yes, see. पता है ना story? Fine. Another question. Which one of the following statement is wrong? पढ़ो. Correct. See कितना गलत सेंटेंस बोला है. 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स रिलीज करने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना. 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स. अच्छा, 2 सेल स्टेज कौन सा है? नेहा इज कंफ्यूज्ड. 2 सेल स्टेज कौन सा है पोलन ग्रेन्स का? वेजिटेटिव जनरेटिव. इसी स्टेज में रिलीज करता है 60% एंजियोस्पर्म्स.
फिर भी वो स्टिग्मा में गिरने के बाद वो 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट होगा. दैट मीन्स 2 मेल गमीट्स विल कम आउट ऑफ दिस. 2 मेल गमीट्स विल कम. सो फर्टिलाइजेशन हो गया ना आगे? होता है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सो चाहे वो 2 सेल में रिलीज किया 3 सेल में रिलीज किया फर्क नहीं पड़ता है. पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो जाते हैं. बाकी सब सही है. पोलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर मंथ्स. सही है. कौन कौन सा फैमिली वायबल रहेगा? जियान, सोलानेसिए, लेगुमिनेसे, लेगुमिनोसे, आर से क्या है? कौन सा फ्लावर है? रोसेसिए. When pollen is shed at the intine is made up of cellulose and pectin. Exine is made up of Purva. Exine is made up of which chemical? भूल गई. वो important layer है. That is the most resistant organic material. Which is that chemical? Exine sporopollenin. तो याद रखो, अभी लिख के रखो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. इंडाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. फाइन. वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल. ऑफ कोर्स सही है. वेजिटेटिव सेल कितना मोटा है? तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. ये पढ़ो, कहानी है. 60% एंजियोस्पर्म्स में टू सेल स्टेज में रिलीज होता है. यू ओनली रीड. ओके. देन दैट टू सेल स्टेज से जनरेटिव सेल बाद में फिर रिलीज होता है पोलन ग्रेन्स, नहीं मेल गमीट्स. सो मेल गमीट्स कैन फ्यूज विद द एग एज वेल एज पोलर न्यूक्लियस. एग से फ्यूज किया तो जाइगोट, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज किया तो एंडोस्पर्म. यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस बताया. डू यू नो व्हाट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस? ट्रिपल फ्यूजन होने के पहले सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियस फ्यूज होता है. मतलब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर देयर इन द सेंट्रल सेल. है ना? भूल गए क्या? दिस इज एग apparatus ना. synergate, egg, antipodals, central cell. Now my question is, ये दो न्यूक्लियस ना they will fuse just before triple fusion. वो फ्यूज करके बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. In angiosperms, functional megaspores develop into what? ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया. क्या है आंसर? एम्ब्रियो. 21 में पूछा था. या एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज डैश. पूर्वा, कल कितने कंफ्यूज्ड था, आज देखो अभी सही बोलेगी. पता है. एंडोस्पर्म इज टेरियन. वेरी गुड, सही बोला. बी पता है ना, कौन है 2n कौन है 3n, वो सब कुछ. एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स है, उसमें एक ही सेल 3n है. बाकी सब कैसा है? n. 2n भी नहीं, n. हैप्लॉइड सेल्स रहता है 6. ओनली दैट सेंट्रल सेल की न्यूक्लियस डाइप्लॉइड रहेगा. ओके. आंसर बोला नहीं ना. assertion. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not provide nectar. True. 25 NEET. Oh my god, इतना इजी सवाल आते हैं. Then the flowers produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flowers. Flowers produce enormous amount of pollen grain in wind. Numerous pollen grains तो बनाना ही पड़ेगा. आधा अधूरा थोड़ा लॉस होता है. Yeah. Then in the light of the above statement, choose the correct answer. तो हो गया ना आंसर. assertion एक सेंटेंस ट्रू है, रीजन एक अनदर सेंटेंस दैट इज आल्सो ट्रू. दोनों के रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा है ना. देयर इज नो रिलेशन कनेक्टिंग इन बिटवीन देम. आई करेक्ट है ना? इसके बीच में कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है. सो द आंसर शुड बी सी. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वो क्लियरली इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आया उसमें.
ट्रू। और एक क्वेश्चन 25 का देखो, a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleus and 7 cell। मैं बार बार बोलते हैं ना, ये पढ़ के जाओ कि देखो कुछ है 8 cell and 8 nucleus and 7 cell, ट्रू है ना? ट्रू है। egg apparatus has two polar nuclei। egg apparatus मतलब that embryo sac को two polar nuclei है। okay, let's just check the answer once। R is false। मैं भी वही सोच रहा है, egg apparatus has two polar nuclei मतलब दिस एक ऐसे wrong हो गया। मैं बताता हूँ egg apparatus मतलब क्या पता है, ओनली द माइक्रोपाइलर एंड में जो भी है उसको ही egg apparatus बोलता है, मतलब egg plus two synergid। egg apparatus मतलब एम्ब्रियो साक को पूरा नहीं बोलते, वो एक कहीं पे लिख के रखो। egg apparatus मतलब synergid, two synergid plus egg। That means the things in the micropylar end is called egg apparatus। So this was a tricky question। जो ना ये एग apparatus पूरा एम्ब्रियो साक को एग apparatus समझता है, उसको ये आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज दे विल थिंक हाँ दो पोलर न्यूक्लियस तो ही रहता है, बट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग apparatus, राइट? एग apparatus कंटेन ओनली टू synergids and one egg। पढ़ते टाइम में इसे स्पेसिफिकली पढ़ना है। सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, दोनों सही है। रीजन तो नहीं है, रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन, सो विच विल बी दिस? हाँ तो दोनों सही है नहीं, एक सही है एक गलत है, so there is no point of discussing the reason in between them। first sentence is true, A is true, R is false, D yes। note down किया? egg apparatus क्या है? one egg two synergid। this is also 2025। I think बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से 25 में, and everything is related to this embryo sac। ठीक है। cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। Presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells। Okay, makes sense। tapetum के बारे में बोला है। So tapetum is the, कहाँ पे है? You know that butterfly like structure, right? मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। So ये नीचे का शेप थोड़ा अलग हो गया, वेट। Here, 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 ऐसे चार जगह पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल रहता है। स्पोरोजीनस टिश्यूज आर देयर। tapetum is covering them। this layer is called a tapetum and सबसे बाहर की जो लेयर है that is, anybody name this layer? epidermis। epidermis, endothelium, middle layer is this, middle layer tapetum। so tapetum is multinucleated क्योंकि उसमें नरिशमेंट, उसको साइटोप्लाज्म में फूड रिसोर्स रहता है, नरिश कर सकते हैं। सो tapetum cells have dense cytoplasm and often multinucleated। लिख के रखो, tapetum is multinucleated। okay, and
यहाँ पे रीजन गलत है, बिकॉज मोर द न्यूक्लियस मोर द कैपेसिटी टू फीड द स्पोरोजेनस टिश्यू, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। एक न्यूक्लियस है तो भी किसको फीड कर सकते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू को फीड कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग लाइक मोर न्यूक्लियस है इसलिए वो अच्छे से खिला रहे हैं किसको, developing pollen mother cells. So that is wrong. So the main role of tapetum is to secrete enzymes and nutrients for the pollen grains, मतलब pollen mother cells, not just efficiency due to more nuclei. ज्यादा nucleus है तो more efficient, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रीजन में ऐसे बताया ना, presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency, ये relation नहीं है। There is no relation in between the number of nucleus and the efficiency of the tapetum. Okay, note down करना है तो note down कर सकते हैं। There is no relation between the presence of more than one nucleus and the efficiency of tapetum. Moving to another question. How many meiotic and mitotic divisions needed to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? AB25. Okay. एक मैच्योर फीमेल गमीटोफाइट बनाने के लिए, हाँ फीमेल गमीटोफाइट मतलब कौन, एम्ब्रियोसाक ना, एम्ब्रियोसाक बनाने के लिए हाँ क्या चाहिए, कितना मियोटिक एंड कितना माइटोसिस, वन मियोसिस एंड थ्री माइटोसिस। वेरी क्लियर राइट, लॉजिकली तुरंत बताया वो भी, आई रियली लाइक दैट, एक्सपर्ट हो गया चैप्टर में। ओके देन which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants? ये ना दिस इज नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, बोल सकते हैं इस चैप्टर से डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन की टाइम में क्या क्या फ्यूज करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन हियर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या फ्यूज करते हैं, यू नो व्हाट इज हाउ डोली कैसे बनाया, डोली इज अ शीप, वो असेक्सुअली बनाया, पता है ना, डोली इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एग, वो असेक्सुअली बनाया हुआ एक ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन को भी असेक्सुअली बना सकते हैं लेकिन वो मना किया, इट्स लीगल, तो इसलिए नहीं बना रहा है। हमारा एक बॉडी सेल से एक न्यू ह्यूमन को क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो नीड फॉर एग एंड स्पर्म टू मीट। ओके, ऐसे बनाया हुआ एनिमल्स रहता है जैसे डोली, तो डोली को एग प्लस ब्रेस्ट सेल से फ्यूज किया, एग प्लस स्पर्म नहीं, वो एग प्लस ब्रेस्ट सेल है। एक फीमेल शिप की एग लिया, उसका न्यूक्लियस रिटेन किया, और एक फीमेल शिप की ब्रेस्ट सेल्स लिया, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, फिर क्या किया है, फ्यूज किया है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू थिंक इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बोलते हैं, दो सेल से फ्यूज करने को क्या बोलता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट मतलब cytoplasm plus cell organelles, all the living things inside a cell is called a protoplast. So the fusion of protoplast occurs in somatic hybridization. लिखना, fusion of protoplast occurs in somatic hybridization. Protoplast मतलब दो सेल की cytoplasm and the nucleus. Another question. Asexual reproduction occurs usually by biflagellate zoospore. Zoospore मतलब ऐसे दिखता है, वो कंप्यूटर माउस की तरह दिखता है, ऐसे। This is how zoospores appear. दो फ्लैजेला तो ड्रॉ किया मैंने, तो बाइफ्लैजेलेट है, एंड दे आर असेक्सुअल। स्टेट बोर्ड सिलेबस में कल पढ़ा है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल zoospore। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलना है इसमें, स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट की सेट सेलेक्ट करना, तो ये सही है। एंड आई विल से यू वन मोर ट्रिक, कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुम लोगों को आंसर नहीं आ रहा है तो जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस, इट्स अ ट्रिक। इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, मीन्स ए को 75% मोर चांसेस है वो करेक्ट होने का।
समझा? तो यू कैन इवन गेस फ्रॉम द ऑप्शन, दिस हमेशा सही नहीं होता है, दैट्स इट। बट इफ यू हैव नो चांस, कुछ भी नहीं मिलेगा, इवन दो हमें ऐसे बिना आंसर करके छोड़ा तो सेफ साइड है, हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। बट मैं बोला ना, रैंक तक आने के लिए यू हैव टू अटेंड मोर। अगर जब तक तुम क्या इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर रहा है, तब तक वो लेवल पे नहीं आएगा। यू हैव टू अटेंड क्वेश्चंस। ओके, मैं बोला ना 50% सही लग रहा है तो फिर अटेंड कर। तो ऐसे हमें गस वर्क कर सकते हैं। सो ए इज ट्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओगमस मेथड ओनली। गलत है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली ओगमस। ओगमी क्या है? हाँ हाँ हाँ, ओगमी देखो, आइसोगमी, अनआइसोगमी, ओगमी। सो एक बार देखते हैं वो तीनों क्या है। अनआइसोगमी मतलब डिसिमिलर गमीट्स का फ्यूजन। आइसोगमी मतलब सिमिलर गमीट्स का फ्यूजन। ओगमी मतलब एक लार्ज फीमेल गमीट, एक वो नॉन मोटाइल है, और एक स्मॉल मेल गमीट जो मोटाइल है, उसके साथ फ्यूज हो रहा है। मतलब यही चल रहा है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक कौन किसके पास जा रहा है? मेल फीमेल के पास जा रहा है, फीमेल मेल के पास आ रहा है। हाँ, मेल फीमेल के पास जा रहा है। मेल गमीट इज गोइंग टू फीमेल गमीट, तो हु इज मूवेबल? मेल। ओगमी वही बोल रहे हैं ना, वन शुड बी मूवेबल, विच वन? मेल। एंड द फीमेल इज स्टैटिक। एग तो कहीं पे जा नहीं रहा है ना, वहां पे ही रहता है, एम्ब्रियो साक में सेफली है, पोलन ग्रेन्स आ रहा है ना उसके पास। ह्यूमन केस में भी एग तो ओवरी के बाहर जस्ट खड़े हैं, स्पर्म्स आर मूविंग टू दम। ओके, सो दैट इज करेक्ट एक्चुअली, ऊगमी ही चल रहा है। लेट मी चेक बी। बी तो सही होना चाहिए, देखो as per that theory तीनों में बी भी आ गया है। एक बार आंसर देखते हैं। सी इज द आंसर। हाँ, तो बी इज रॉन्ग। ओके, तो ऊगमी इज नॉट द ओनली वे, ऐसे लिख के रखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट द ओनली वे, ओगमी इज नॉट द ओनली वे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनआइसोगमी, आइसोगमी, ये सब कुछ आ सकते हैं उसमें, दैट्स इट। सो उसका आंसर में ऐसे लिख के रखो, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। ओगमी भी हो सकता है। अच्छा दिख रहा है या आइसोगमी भी हो सकता है, अनआइसोगमी भी हो सकता है। अभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन हैपन बाय द फ्यूजन ऑफ सिमिलर गमीट्स, डिसिमिलर गमीट्स, वन लार्ज मोटाइल नॉन मोटाइल फीमेल गमीट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गमीट। इसको 3 प्रकार है, देखो, वन आइसोगमी, अनआइसोगमी, ओगमी। सिंस यहाँ पे ओगमी ही मेंशन किया, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी सब सही रहेगा। अगर ये दिस इज द आंसर राइट, सो डी एंड ई इज आल्सो ट्रू। The major pigments found are chlorophyll A, C, and carotenoids and xanthophyll. True. Vegetative cells have a cellulosic wall, usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. Yes, vegetative cells को cellulose से बनाया हुआ एक cell wall रहता है, which is covered outside by gelatinous coating of algin. Algin का एक covering भी रहता है। This sentence is new for you. लिख के रखो, vegetative cells have a cellulosic wall and a gelatinous coating of algae. Because sexual reproduction can happen by ओगमी, anisogamy and isogamy. One more sentence क्या लिख के रखा अभी? वेजिटेटिव सेल्स को सेलुलोसिक सेल वॉल भी रहता है, जेलाटिनस आल्जिन का कोटिंग भी रहता है। ये थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम से पूछा हुआ है, आल्जिन। ये फिगर टेक्स्ट बुक में है ऐसा एक फ्लेवर। क्या लग रहा है? ए राइट। थोड़ी देर पहले मैंने टसल्स दिखाया था ना, टसल्स का क्या काम था? डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स, मतलब प्रोड्यूस एंड डिस्पर्स पोलन ग्रेन। कौन पोलन ग्रेन बनाते हैं पूर्वा? स्टेमन राइट।
तो दे आर स्टेमन्स, अभी तुम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है दे आर नॉट स्टिग्मा, दे आर द स्टेमन्स, दीज आर द स्टेमन्स, ये स्टेमन्स है। सो स्टेमन्स का पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस एंड डिस्पर्स द पोलन ग्रेन्स, दे आर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। ये कौन सा पॉलिनेशन में आएगा? विंड पॉलिनेशन में आएगा। या तो ऐसे लिख के रखो, दिस टसल्स और वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। इसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, रफ डायग्राम ड्रॉ करो, draw a rough diagram like this and then label them as the stamens. एक क्वेश्चन देखो, identify the set of correct statement. Flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. क्यों नहीं? Vallisneria is a water pollinated flower, वो उतना नेक्टर कुछ नहीं बनाते। या फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, वो बराबर बोला, वाटर लिली का वाटर पोलिनेशन नहीं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोल, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, तो ये करेक्ट, ये रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द वाटर pollinated species, the pollen grains are protected from wetting, mucilaginous covering तो रहता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन सी तो सब में है ना, सी जो इस स्टेटमेंट है वो सब में दिया है। अच्छा ये इसमें नहीं ना, अच्छा ओके राइट। तो वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड, अब वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर बोला ना, तो ट्रू स्टेटमेंट है। यस, तो बी सी सही है, मतलब दिस इज द आंसर। डी भी सही रहेगा। pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like. In some hydrophytes the pollen grains are carried passively inside the water. वो भी सही है, actually E is also true, but there is no option like E is also true. This one is also true actually, but ये option में नहीं है, कहीं पे भी B C D E option नहीं है ना, so there can be options in which a true statement is not mentioned in the option. देखो ये सही है, because hydrophytes, some sea grasses completely water के अंदर है, तो pollen grain बाहर भी नहीं आएगा, बस वाटर के अंदर ही रिलीज हो रहा है, so they will be passively floating in the water and reaching the female flowers. समझा? Okay. Now moving to another question. Vallisneria की फीमेल फ्लावर्स ऊपर आते हैं, forgot it. Female flowers are colorful. Male flowers are under the next. Female flowers को let me check. वो सही है, फीमेल फ्लावर्स कलरफुल है, बट वो नेक्टर बनाते हैं क्या? लेट मी चेक वंस। दो मिनट्स दे दो मुझे, आई विल चेक इट। नो नेक्टर, नो नेक्टर, सो देयर इज नो नेक्टर देयर, तो ये गलत है। कलरफुल है, फीमेल फ्लावर्स आर देयर which comes come up. Okay, फॉर एग्जाम्पल ये दिखाता हूं मैं फोटो।
So only B, C, D, E are correct. Vallisneria की flowers को मैंने दिखाता हूँ. Oh, not typically colorful. Not typically colorful बोल रहा है. तो image में तो color है. Often white, so we can not brightly colored. No need to mention them as colorful. So you can clearly say that this sentence is wrong. This is wrong. No problem in saying that. Vallisneria को उतना colorful भी नहीं है. Flower तो female flowers ऊपर आते हैं. Male flowers submerged inside the water. But they do not produce nectar. They are not colorful. Okay. So only remaining options are correct. इसमें only B, C, D, E are true. Moving to the next question. A pink flowered snapdragon. This question is from genetics. ये छोड़ दो. ये genetics पढ़ने के बाद पढ़ा था. Genetics का cross है वो. Which of the following statements is correct? Fusion of two cells is called karyogamy. सही है क्या? Karyogamy नहीं पढ़ा है? Fungus की reproduction 11th standard. Karyogamy. Karyogamy. Fusion of two nucleus. Two nucleus है, two cells नहीं. Fusion of two protoplast is called a plasmogamy. ये सही है. हाँ तो for answer हो गया ना. B is the answer. Organism that depends on living plants are called saprophyte. गलत. Organism that depend on living plants can be heterotroph. अगर parasite भी आ जाएगा ना, living plants में depend कर रहा था, but never saprophyte. Saprophyte depends on dead plants, dead organisms में depend होता है. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as sheath cells. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. नहीं, गलत है, heterocyst है. पता था ना heterocyst? Very good. Heterocyst is the cell present in algae, blue-green algae. So there is no sheath cell which can produce fix atmospheric nitrogen. It is Suna. Heterocyst is the name of the cell which fix nitrogen in cyanobacteria. So ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है. So only that second one. So ये क्यों गलत हो गया? Fusion of two cells is called karyogamy. Fusion of two nucleus is called karyogamy. अगर एग्जाम में आया तो कैसे पता चला है? कार्यो मतलब न्यूक्लियस है, याद रखो. प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन तो प्लास्मोगमी हो सकता है, मैचिंग. So that's it. देखो B is the correct one. A dioecious flowering plant prevents both. Dioecious का मतलब क्या पता है? मेल अलग प्लांट में, फीमेल अलग प्लांट में. तो उसमें only one is happening, synogamy. बाकी दोनों प्रिवेंट है. Autogamy and geitonogamy are prevented. मतलब ऑप्शन B. ये 2017 में पूछा था. लिख के रखो, dioecious flowering plant prevent both autogamy and geitonogamy. Dioecious plant prevent both auto and geitonogamy. Next question. Which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? Sakshi. Nucellus and antipodal cell. Ploidity बता सकते हो nucellus का? Nucellus किधर है? मेगास्पोरेंजियम में, एम्ब्रियो सैक के बाहर. वेरी गुड. वो तो डाइप्लॉइड है. एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड. तो ये दोनों अलग अलग है. दोनों हैप्लॉइड पूछना चाहिए ना, हैप्लॉइड दोनों होना चाहिए. एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस. एग का न्यूक्लियस हैप्लॉइड है. सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस? प्लॉइडिटी नहीं पूछा, व्हाट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस? दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर जो न्यूक्लियस बनता है, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस. दो पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, फ्यूज किया तो डाइप्लॉइड है. सो एग हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड. ये एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड, न्यूसेलस डाइप्लॉइड. तो दोनों आंसर नहीं है.
मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स. मेगास्पोर नहीं, मेगास्पोर मदर सेल को मियोसिस होना है ना, तो इट इज डाइप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल इज डाइप्लॉइड, एंटीपोडल सेल आर हाप्लॉइड. एक सेल एंड एंटीपोडल सेल. तो ऑफ कोर्स एम्ब्रियो सैक में 6 सेल्स है, उसमें एक सब ये है, क्या है, यूनिसेलुलर है, जी, हाप्लॉइड है. So this is the answer. Egg and antipodal cell. Endosperm is consumed by developing embryo in the seed of which plant? कौन सा सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है? एंडोस्पर्म एक्साल्बुमिनस पूछ रहा है ना, एक्साल्बुमिनस. नहीं. Castor is dicot. Dicot plants are exalbuminous, but except castor, that is albuminous. Castor is albuminous. समझो, उसमें एंडोस्पर्म रहता है. P. नहीं रहता है पूछ रहा है. यस, कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम्ड पूछ रहा है. सो दैट विल बी आफ्टर हाफ एन आवर सर. तो समझा, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड, कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब नॉन एंडोस्पर्मस पूछ रहा है. नॉन एंडोस्पर्मस कौन है? पी है. डाइकोट प्लांट्स है. डाइकोट प्लांट एक्सेप्ट कैस्टर. इसमें डाइकोट तो पी ही है. कोकोनट एंड मेज मोनोकोट है. यस. लास्ट क्वेश्चन. कितना क्वेश्चन बाकी रहेगा? आई थिंक ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर इन. 2 क्वेश्चन ही बाकी है, वो डिस्कस करके जाते हैं ना. ओनली 2 क्वेश्चन. व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन? नेकेड सीड, कवर्ड सीड, लीफ फोल्ड, सीड बड. एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड है, तो एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड. यस, वेरी गुड. 2007 का है, पुराना है. देन which plant will lose economic value if its fruits are produced by induced parthenocarpy? पार्थेनोकार्पी पता है ना? पार्थेनोकार्पी इज द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? which hormone is applied to induce parthenocarpy? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ऑक्सिन. ऑक्सिन का केमिकल नेम है ना ये. तो कौन सा फ्रूट की ये लॉस होता है, वैल्यू लॉस होता है पार्थेनोकार्पी किया तो? आंसर पोमेग्रेनेट. So parthenocarpy will make the fruit seedless and that useless. So pomegranate का सीड में, सीड के ऊपर थोड़ा सा फ्लैश रहता है ना. So if there are no seeds, then that fruit is not consumable. So with this we are winding up. सारा questions हमने discuss किया है. Yes. Okay. So from the next class onwards, it will be a new chapter.